2 minutes. Hello. Hello. Good afternoon all. I request all the participants while joining, please unmute your phone. Please, I request once again, please unmute yourself. Why? Because it's very difficult to mute while you are joining. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Shall we start, ma'am? Yeah, sure. A session will be started with welcome, ma'am, general welcome, and the introduction of the speaker. And the session will be continued by yourself, ma'am. And it will be with the next. It is being followed by discussion, and it will be ended with a vote of thanks. Shall we start, ma'am? Okay, sure. Start. Welcome you all for a national level webinar series Rudayarna 2020. Today we are in the 4th day session of 8. Today we are beginning with an Dr.Harmeet Kour Madam, Associate Professor, Department of Agaritantra Evam Vyavhar Ayurveda from SKSS Ayurvedic Medical College, Sarba, Panjab. So I welcome you, ma'am, for this webinar series. Series 1 of Rudayarna 2020. Madam is going to talk on household poisoning. I welcome you, ma'am. So myself, Dr. Manjula from Agaritantra Department. It's my privilege to remember His Holiness Guru Mahanta Swamiji for his blessings to start this session. I welcome you, Swamiji. I welcome to our SVMVV Sangha Chairman, Sri M.G. Patanshettar, Secretary, Sri Dilip Kumar Sir, and all the board members for providing an opportunity and support to organize this national webinar, Rudayarna 2020. I welcome you all, sir. So I welcome to today's our guest speaker, Dr. Harmeet Kaur Madam, Associate Professor, Department of Agaritantra Evam Vyavhar Ayurveda from Ludhiana, Punjab. I welcome you, ma'am. Ma'am is going to talk on household poisoning. I welcome our event president KC Das sir, principal SVMAMC for their kind support and encouraging us to conduct Rudayarna 2020. I welcome to event organizer Dr. LK Pattar sir, associate professor, HOD Department of Agaritantra SVMAMC ILKAL. I welcome you, sir. I welcome Dr. G.N. Kannoli, Assistant Professor, Department of Samhita Siddhanta, for your support and conducting National Webinar Rudayarna 2020. I welcome to all the teaching staff and non-teaching staff, PG scholars, UG scholars, internees of SVM AMC and PG Research Center ILKAL for their support and being a part of a webinar. I welcome the Department of Agaritantra Evam Vyavhar Ayurveda, SKSS Ayurvedic Medical College, Saraba, Ludhiana, Punjab, for their support and being a part of this Rudayarna 2020. I welcome you all. I welcome all the teachers, PG, UG scholars of other institutes
and the participants who are watching in YouTube for part of Udayana 2020. I welcome you all. Now I request Mr. Akib Mutturaj, third year UG scholar, for introducing the guest speaker. Over to you. Hello, ma'am. Am I audible? Ah, Good afternoon to everyone. Myself, HS Seki from third year UG scholar. It's my privilege to introduce today's eminent speaker, Dr. Harmeet Kour, madam. Ma'am has completed their PG studies from LRP Ayurvedic Medical College, Nasik. Ma'am is presently working as a associate professor in the Department of Agada Tantra in SKSS Ayurvedic Medical College, Sarba, Ludhiana, Punjab. Ma'am have a teaching experience of 6 years. Ma'am has published 7 national and international journals, and a textbook of Agada Tantra is also in process. We are honored to have you, ma'am. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all the organizers and welcome in Hirday Avna webinar. Thank you, Dr. L.K. Patel, HOD, Department of Agatantra, Ayurvedic College, SVM, Principal K.C. Das, sir, Dr. Manjula, Associated Professor, ma'am. Thank you. Thank you, G.N. Kanoli, sir, dear students, and welcome in this webinar. Now, without wasting, let's start our topic, that is household poisoning. Introduction. Okay, let's start with introduction. Introduction for poison. A poison is any substances that is harmful to the body where eaten, injected, or absorbed through the skin. The substance can be poisonous if enough is taken. Poison is an important health problem in every country of the world. As we all know, occupational exposure to industrial chemicals and pesticides. One sec. There is a little problem with. Sure. Okay, occupational exposure to industrial chemicals and pesticide. Accidental or international exposure of household pesticides and pharmaceutical products and poisoning due to venomous animal, toxic plants and food contamination all contributes to morbidity and mortality. Now comes on household poisoning. Household poisoning are substances in your home that can cause harm when swollen, inhaled or touched. They include medicines, detergent, cleaning products, toiletries, garden chemicals, and other common household products that we use in day-to-day life. Now comes on household poisoning. If we are going to see the classification, they are classified into 3 groups: domestic, medicinal, and then garden poisoning. First of all, let's discuss what are the domestic household poisoning. Domestic household poisoning are the poisoning which are used in our day-to-day life. That is like detergents, like bleaching agents. सर को अजीत सर को रिसर्च का भी देना Am I audible? मैं सुबह फोन किया तब सर को मैंने रवि का ही बोला था कि रिसर्च का भूल गया था, बाद में ध्यान में आया कि रिसर्च पे रह गया। सर को बोलो रिसर्च के 2 या 4 लेक्चर रहेंगे हफ्ते में एक ही। Please mute your that mic. yeah, ma'am. Done, ma'am. Detergent, these are bleaching agents, floor cleaner, laundry detergents, solvents like kerosene, thinner, automotive products like petrol, battery waters. These all are daily used household products which are daily used by ourselves or by our parents or anybody else. Cosmetic and personal care.
soaps, shampoo, nail paint, nail polish remover, other household like mothballs, desiccants. Desiccants are that solid pouches that are used to make dry, that pouches make dry so that they will. Next, household bleach. There are many bleaches, chlorinated bleach and non-chlorinated bleach. Chlorinated bleach containing chlorine, hypochlorite, that are used for water purification. In large amount of water purification, we used chlorine and disinfection and bleaching agent. The toxicity of bleach is related primarily to the oxidizing capacity of the hypochlorite ion and the pH of the solution. But the second bleach, that is non-chlorine bleach, which is safer than chlorinated bleach, but we can't say that is non-toxic. That is also toxic, but less than the chlorine-based bleach. Used in numerous household products like disinfectants, chlorine-free bleach, fabric stain remover, contact lens disinfectant, hair dyes, disinfectant, hair dyes, tooth whitening products, many hydrogen peroxide, sodium parabonate, sodium paracarbonate. These all are non-chlorinated bleach which are used in our day-to-day life, are in maximum quantity in daily life, that causes hazardous effect to our body. Now, clinical effect of these chlorinated bleach. If we are discussing mild to moderate, that is diluted solution 3 to 5%, that causes immediate burning in the mouth and throat, GIT upset, and no further injury. That is up to 3 to 5% of hypochlorite solution. But if hypochlorite solution is more than 10% or at 10%, then severe concentration solution that is more than 10%, gastric burn, dysphagia, drooling, saliva. कंटिन्यू सलाइवा का निकलना, ठीक है, थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमिनल पेन, थ्रोट पेन, हेमेटोमेसिस, GIT perforation, that causes severe concentration of hypochlorite, which we used frequently without thinking a minute that this solution is very harmful for us. Nowadays we are using disinfectant very frequently, even 3 to 4 times in a day because of that coronavirus. But we can't think even a single minute that these bleaches, these disinfectant cause hazards to our body, to our children, or to our grandparents. Systemic toxicity, that is electrolyte disturbance, metabolic acidosis, increase acid level in our metabolism, mental status change, cardiovascular effect, and pulmonary edema. That are the clinical features of chlorinated bleach. Now, we are using chlorinated bleach with ammonia. That is very dangerous for our cell. Without thinking, chlorine and ammonia changes, that is equal to chloramine gas, which is very hazard and which has a killing effect to ourselves. This is very dangerous. Hypochlorite and acid we are using together for toilet cleaners. Bleach and ammonia, as we are saying on the slide, there is bleach and ammonia. We commonly use acids, bleach, and hypochlorite to clean our toilets. These are more dangerous if we are combining these two together. Next is inhalation of chloramine gas. Now comes chloramine gas, that is hypochlorite and that bleach. If combined together, that chloramine gas occurs. If inhaled chloramine gas, that causes corrosive gases may produce when mixing bleach. That causes irritant effect to the mucosa, eye, nose, throat, and may trigger wheezing and respiratory symptoms. Many respiratory symptoms occur there. In serious exposure, which are rare, the household product, upper respiratory tract causes obstruction and chemical pneumonitis may also occur there.
ingestion. On ingestion, treatment is unlike to be required if only small amount has been ingested. वैसे इसका ट्रीटमेंट हम लोग करते नहीं है, इंजेक्शन हुआ है थोड़ा कम अमाउंट में है, लेकिन अगर कुछ इसका अगर ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले the first thing is that gastric lavage should be contraindicated. Actually, as we all knows, in all corrosives, in all alkaline poisons and in all acidic poisons, gastric lavage is contraindicated because there is a risk of aspiration or perforation. Same activated charcoal. Activated charcoal is also contraindicated because it induces vomiting that causes esophageal perforation and causes excess heat, exothermia, that causes esophageal perforation. So neutralization is contraindicated. Also, the treatment is simple dilution. Small amount of milk and water should be taken is possible after ingestion. The amount is 8 ounce, or we can say that 240 ml in adults and 120 ml in children are recommended for minimize the risk of vomiting. On inhalation, leave the area of exposure immediately. That area, उस area को छोड़ दो. For example, we are using these gases or we are cleaning our floor, तो वहाँ पे एक pungent smell आने लगती है. That causes irritation to our mucosa and sometimes asthma-like symptoms appear. To avoid these symptoms, to avoid inhalation of that gases, leave that area, supplement oxygen and bronchodilators. Bronchodilators are advised and airway spiritu is necessary. For eye, irrigate copious amount of water. Irrigate the eye with copious amount of water. For dermal exposure, treatment for dermal exposure, remove all exposed clothes and washed exposed area of the body twice with water. Standard burning care, that is dressing, antibiotic ointment for corrosive injury. As we all know, for corrosive injury or for burns in Ayurveda, we are so many preparation. One of them is Shatdohat Grita and that coconut oil. That has a good property for burn care. Wash all exposure clothes with soap and water. Complications are unlikely. Now next is clinical features and hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, as we all know, everybody, even a small child, can know that hydrogen peroxide is disinfectant. We will clean our feet, our toes with hydrogen peroxide. Many times we use hydrogen peroxide for cleaning our toes, for disinfectant, for contact lens disinfectant. But this is very dangerous and that has a hazardous effect to our body. That is a colorless, odorless oxidizing agent available in varieties of concentration from 3 to 90% of concentration. General purpose is disinfectant, that is 3%. If we are using for disinfect, only 3%, that is mild toxic. And if we are using industrial strength up to 90%, fabric stain remover 5 to 15%, contact lens disinfect 3%, hair bleach and hair dyes 6%. As you all know, when कोई भी व्यक्ति जैसे अपने बाल ब्लीच करता है, तो जब भी आप देखो अगर उससे थोड़े से सिम्टम्स भी एस्थमेटिक सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, वो एग्रीवेट हो जाते हैं. अगर एक यंग भी ब्लीच करता है तो उसकी भी आईज इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं. तो आप ये मानिए कि इसका कितना साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे हो सकता है. ठीक है, बट हम लोग इसको इजी गोइंग वे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज okay, then we are using it very frequently in every day, almost every moment. Everybody is using that product for disinfectant. Now, clinical effects. What are the clinical effects of hydrogen peroxide? If orally ingested, immediate or spontaneous vomiting, intractable vomiting, diarrhea, hematemesis with large ingestion.
Eye exposure, mild to severe corrosive injury. It depends on the product. Product means like if 3% is used, 15% is used, as I already told you that here bleach containing 6% of hydrogen peroxide. That causes eye irritation. Next is skin exposure, that mild erythema, redness, rashes occur with that hydrogen peroxide. Now comes on treatment. ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ट्रीटमेंट सबसे पहले तो यही है डिकंटामिनेशन. उसके बाद अगर डिकंटामिनेशन से क्लियर हो रहा है, देन अगर नहीं हो रहा तो इमरजेंसी स्पोर्टिव मेजर्स एंड देन फाइनली मॉनिटरिंग. ओके, डिकंटामिनेशन में है डाइल्यूटेशन. Do not induce emesis, as we all know in corrosive poisons, in alkaline poisons are in caustic products. We can't do gastric lavas are activated charcoal, so that do not induce emesis because of perforation increase. Chances of perforation may occur. Activated charcoal contraindicated. Irrigation with cupis amount of water if eye exposure. That we all know what is decontamination. Next comes that is emergency and sportive measure. IV fluid to correct dehydration, electrolyte imbalance due to protective vomiting and diarrhea. Then diarrhea and vomiting only treat with that hydrotherapy, that is dehydration will be treated by IV fluids. Now monitoring, most exposure do not require any specific testing. बिकॉज अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर हुआ तो टेस्टिंग की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा ले लिया, किसी ने सुसाइड के हिसाब से लिया है, ठीक है, या फिर किसी बच्चे ने उठा के पी लिया है और अमाउंट ज्यादा है, दैट कॉजेज परफोरेशन और एनीथिंग एल्स विद देयर esophagus or stomach. That time we need endoscopy within 24 hours of the patient with GIT burn. That is the monitorization for that hydrogen peroxide poisoning. Now next is it possible to avoid hydrogen peroxide in our day-to-day life? Yes, it is possible. In home remedies, there are many more substances that they are disinfectant with their disinfectant properties. They are vinegar. This is vinegar. Vinegar has very acidic content, so that it is easily used for disinfectant. Lemon, vinegar, alcohol. We can use these products at the place of hydrogen peroxide to clean our shelves, to clean our stores, to clean our kitchens, to avoid these kinds of hazards to our body. Now, next is corrosive agents. There are so many corrosive agents that causes that hazards effect to our body. Caustic and corrosive agents. These are chemicals that irritate, that burn, that damage our skin and other living cells. Mineral and organic acid, alkalis. Next is, what are the household products that containing acids? For example, here in the slide, you just see automobile batteries. Automobile batteries, sulfuric acid, that is 25 to 30%. Toilet bowl cleaner that containing hydrochloride acid 10 to 25%, sulfuric acid 80%, bowl cleaning sodium bicarbonate 70 to 100%. And as you all know, sulfuric acid, hydrochloric acid and sodium bisulfate, it's very dangerous and it's very corrosive agents. Nowadays there are a lot of cases of that veterillage, the disfigurement, body change, or that face discoloration, or face figures change because of these acids. And then see how difficult and how poisonous these acids are. But we are using these acids frequently to clean our bathrooms. Next, containing alkalis, detergent,
commonly used in daily life, who are almost daily used, that detergents, sodium thiophosphate, drain cleaners, sodium hydroxide, ammonium compounds, ammonia hydroxide, metal cleaners and anti-rust, phosphoric acid, oxalic acid, hydrochloric acid, chromic acid, ड्रेन क्लीनर्स, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को वैसे भी वेट्रिलेज बोला गया है बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत कॉमनली यूज होता है, जो विक्टिम एसिड जो जिन पे डाला जाते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहाँ पे ड्रेन क्लीनर के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं। सी हाउ that poisonous or how harmful that sulfuric acid is for us. Next, what are the clinical features of these corrosives and caustic soda? Caustic that agents. Now, mild, moderate, and severe. Here are mild effects, clinical effects, moderate clinical effects, and severe clinical effects. First, let's discuss mild. Mild is irritation with grade 1 burn. As you all know, first sign of corrosives is burn, then second grade burn, and then deep burn. Then mild is irritation or first grade burn, superficial hyperemia and edema, burn of esophagus, oropharyngeus and stomach if ingested. Second is moderate burn. Moderate burn में क्या है? ग्रेड सेकेंड बर्न, सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स। फर्स्ट में सिर्फ सुपरफिशियल हाइपरइमिया होता है, रेडनेस ऑफ स्किन हो जाती है, लेकिन सेकेंड ग्रेड में क्या है? ब्लिस्टर फॉर्मेशन होने लगते हैं, अल्सरेशंस होने लगते हैं एंड स्ट्रिचेंट फॉर्मेशन, इसोफेक्स का कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है अगर हम ओरली वो लेते हैं। सम पेशेंट्स पर्टिकुलरली यंग चिल्ड्रन डेवलप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एडिमा. Now comes to severe clinical features, that is deep burn, necrosis. deep burn डिग्री डिपेंड करता है, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री, जैसे हम बर्न में देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री बर्न है, देन परसेंटेज ऑफ बर्न 1 to 100% ऑफ बर्न है। इसी में क्या है? डीप बर्न इज द थर्ड डिग्री बर्न। necrosis and gastrointestinal mucosa burn. Complications often include perforation of esophagus, perforation of stomach, and sometimes rarely the perforation of duodenum occur if large amount of that acid are inhaled. Bleeding, hypotension, tachycardia, trachypnea and fever, sometimes upper respiratory edema, and life. This is life-threatening. Severe is life-threatening. Now comes, what are the clinical effects of inhalation, of ocular exposure, and third is dermal exposure. First was that clinical features for mild, moderate, and severe. Then comes, what are the clinical features if inhalation exposure, that is mild coughing and bronchial asthma, nothing more than that. But in severe inhalation, upper respiratory edema, burn, stridor, acute lung injury. After that is that chemosis. In ocular exposure, there is severe conjunctival irritation and chemosis, corneal epithelial defect, permanent visual loss, in severe cases perforation. These are the ocular exposure. And there is this one symptom, that is chemosis, that is after surface of eye, after layer of eye, that is like blister formation. वो एक ब्लिस्टर जैसा बन जाता है जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड नहीं होता है, तो वो हमें मिसगाइड करता है कि ये कोई ब्लिस्टर है, और दैट इज विद दैट corrosive effect. Next is dermal exposure, mild exposure, irritation and partial thickness burn. Metabolic in patient with severe burn or shock. Now treatment. Treatment, as we all knows, that dilute with 4 to 8 ounces of water may be useful if it can be performed shortly after ingestion. Immediate after ingestion अगर है तो हम क्या करते हैं, सिंपल डाइल्यूट वाटर दे देते हैं so that उसके इफेक्ट को कम करें. अदरवाइज हम वॉमिटिंग नहीं कराते, हम ये दैट एक्टिवेटेड चारकोल नहीं यूज कर रहे, हम दैट गैस्ट्रिक लिबास नहीं कर रहे. Okay, nil by mouth. Patient should be nil by mouth until assessed for the need of endoscopy. Then symptomatic and supportive treatment.
Next is hydrocarbon solvent. Before discussing hydrocarbon solvent, let's discuss one thing: what disinfectant we use. In Ayurveda, as you all know, there is Agnihotra Yagya. What is Agnihotra Yagya? Actually, that is yagya which were performed for disinfecting that particular area. That particular area, or we can say that that particular room. As early time, we are saying that in Sahita time, they were performing यज्ञ, जो कि क्या करते थे, प्यूरिफिकेशन करते थे, उस यज्ञ से पूरे एरिया का प्यूरिफिकेशन करते थे. आजकल भी ये देखने में आया, विद इन 30 डेज ऑफ दैट यज्ञ अगर हम स्वैब लेते हैं, कॉटन स्वैब लेते हैं, उससे अगर हम वॉल से वो वॉल का क्लीन करके लेते हैं उस कॉटन स्वैब पे, तो वो बिल्कुल 30 डेज तक भी वो डिसइंफेक्टेड वर्क करता है. वहां पे हमें कोई भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म नहीं दिखता. तो हम रादर यूजिंग दीज products, these acidic products or these toxic products, we will use that अग्निहोत्री यज्ञ हम करवा सकते हैं. हम अपना जैसे गौ में है धतूरा, सॉरी गौ में है, नीम है, ये हम जला सकते हैं. ठीक है, गोमे से भी, जिसको हम उपले कहते हैं, गोमे के उपले हम अगर चलाते हैं, हमने खुद देखा है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में LRP में बहुत बार हम लोगों ने अपना उपले जगा के उसको डिसइंफेक्ट करा है. इवन OT को हम दैट अग्निहोत्र यज्ञ का एक बार हमने OT में करा था, जिससे कि वहां पे हमने डिसइंफेक्टेंट रिजल्ट्स हमें मिले थे. हमने प्रीवियस स्वैब भी लिया था एंड उसके बाद का भी स्वैब लेके हमने भेजा था, तो हमने देखा था उसमें कितनी क्लियरेंस है. अपनी लेवल पे करा था. दैट टाइम वो स्टूडेंट PG स्कॉलर्स थे, हमने ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या ये ठीक है, बट हमें इसके रिजल्ट्स मिले थे. और स्वस्थ में तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे और भी इंग्रेडिएंट मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट. ओके, नेक्स्ट दैट इज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन पॉइजन. Hydrocarbon poisons are a diverse group of organic compound. They are made up of primarily carbon and hydrogen atoms. As you all saying, carbon and hydrogen products से, items से ये hydrocarbons बनते हैं. और ये कितने dangerous होंगे हमारी लाइफ के लिए. For example, petroleum distillation, hydrocarbons are refined from crude oil, kerosene, gasoline, mineral seal oil. Hydrocarbons used as fuel and solvent and are found in many more that household commercial products. As you all know, क्या ट्राइबल एरियाज में अभी भी क्या है, हम जहाँ पे लाइट नहीं है या कुछ एरिया अभी भी है लाइट चली जाती है, they are using that kerosene lamps. केरोसिन लैंप्स यूज करते हैं, या कुकिंग के लिए जहां पे अभी तक गैस लाइन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, वो केरोसिन रूरल एरियाज में केरोसिन यूज करते हैं फॉर कुकिंग. एंड वो केरोसिन उनके फूड के लिए, वो जो कार्बन फूड में जाता है, और ये जो लाइट केरोसिन लैम्प से जो लाइट निकलती है, वो हमारी आईज के लिए, वो हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी स्किन के लिए, या वो दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए कितना सेफ है एंड कितना हार्मफुल है. That is poisonous. Now, clinical effect of that. Clinical effect अगर हम देखेंगे तो terpene oil that causes mild CNS depressant. Aromatics क्या है? CNS depressant with small risk of aspiration. And hallucinations हैं, hallucinated carbonates हैं, जो कि जिसमें जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, ये CNS depressant हैं, renal and hepatotoxicity क्रिएट करते हैं. Even you all knows, जैसे अभी hepatotoxicity प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग that paracetamol is used to induce hepatotoxicity. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अगर हम हेपेटोटॉक्सिसिटी करते हैं, वो CCl4 एंड दैट पैरासिटामोल इज यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी, और उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं. यानी ये क्या है, क्लिनिकल लेबोरेटरी लेवल में हम इंड्यूस करने के लिए, हेपेटोटॉक्सिसिटी इंड्यूस करने के लिए CCl4 और पैरासिटामोल ले रहे हैं, और वही चीजें हम अपनी डे टू डे लाइफ में एज अ पेन किलर यूज कर रहे हैं. See where we are. Being Ayurvedist,
ये चीजें आपको खुद ब खुद अवॉइड करनी चाहिए कि अगर हमें पेन है या किसी भी चीज का थोड़ा सा भी पेन है, वो जस्ट गो एंड टेक अ पैरास्टामोल और हाँ जी ये पेन किलर है, लेमन्स लैंग्वेज में इसको पेन किलर बोलेंगे, क्यों जी ये पेन सबसाइड कर रहा है, लेकिन उसने सुपरफिशियली हमारा पेन सबसाइड हो गया, लेकिन हमारी बॉडी के साथ उसकी क्या क्या चेंजेस हुए, वो हमारी बॉडी के लिए क्या रिस्क फैक्टर लेके आया, वो हम अवेयर नहीं होते उस चीज से। Look, CCL4 and paracetamol is using to induce hepatotoxicity or renal toxicity. इंड्यूस कर रहे हैं वो, जहां पे हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वहां पे इंड्यूस कर रहे हैं एल्बिनोज में कि CCL4 दे दो और इंड्यूस करवा दो, उसके बाद हम इनको मेडिसिन देंगे और इफेक्ट देखेंगे। और वही CCL4 अभी बैंड है, वही पैरासीटामोल हम डे टू डे लाइफ में इजिली ले रहे हैं। थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा पेन है, लेट्स गो फॉर पैरासीटामोल। Now next, what is the treatment? Treatment of hydrocarbonic poisoning, that is maintain an airway and ensure adequate ventilation. Give oxygen if indeed gastric lavas and activated charcoal is contraindicated due to the high risk of aspiration. Observe patient for at least 6 hours after exposure. Monitor करो, pulse देखो, respiration rate देखो, oxygen देखो, इसमें maximum है oxygen saturation देखना है, ठीक है। Next, X-ray is depending on likelihood if aspiration. अगर एक्सपिरेट ज्यादा किया गया है तो हम उसको X-ray रिकमेंड कर सकते हैं। Patient may be considered for discharge after 6 hours. अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, बट अगर सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो हम पेशेंट को दोबारा से एडमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। एज यू ऑल नो, cosmetic, everybody, every minute they are using cosmetic products, everybody, including we people, we all are using cosmetic products, but we never know these cosmetic products cause hazards effect to our body. For example, cologne, perfumes, aftershave lotion, these are some products which we commonly known products, but there are many more products that containing alcohol and these toxin materials. Colognes, perfume, aftershave lotion, oral hygiene products, face toner, all contain alcohol. That depends upon the concentration of alcohol. How much concentration of alcohol is present in that particular product. Often asymptomatic. If less amount of alcohol is there, that is asymptomatic. But if the concentration of alcohol increase, if the percentage of alcohol increase, that may develop slurred speech, ataxia with large ingestion. Deodorants containing zinc. Then next is nail polish remover containing acetone, acetyls, that aromatic hydrocarbons. Large ingestion can cause DNS depressant. Because of these aromatic hydrocarbons, that causes CNS depressant. Hair dyes contain bleach, as we earlier discussed. Hair dyes, hair color are hair bleaches that containing hydrogen peroxide bleach, which have the toxicity level high if more than 3% are used. Then creams, lotions, lipstick, toothbrush, they all containing many harmful laxative effect and emotional content. But as we all know, lipstick that containing lead, 60% of lipstick in market are containing lead. What lead causes? This is as we all know, one of the, if we are discussing metal, non-metal poisoning, lead is one of them. That causes dehydration, that causes constipation, that causes anemia, loss of memory. In children, lead causes loss of memory. And we are using, for day-to-day life, we are using that clay toys for children. Lead with lead paint, toys with lead paint. Our children are using that lead painted toys, and how they affect on our children. The loss of memory, the memory loss, anemia, constipation, loss of developmental skill, all because of lead poisoning. So one should avoid all these things by changing their lifestyle,
We have Ayurvedic, so many Ayurvedic preparations. We can use these preparation at the place of these cosmetic products. Skin whitening. Everybody nowadays are using skin whitening that creams containing hydroquinone. That is independent poison that causes rashes, that if we are using for long time, that causes hyperpigmentation. Even your own color will be changed with that hydroquinone if we are using it for long time. Redness and black pigmentation. Now treatment. Only one treatment is there. First aid measurement and decontamination, generally which is not necessary. But if we are treating the patient with Ayurvedic treatment, decontamination is must. For cosmetic and for that cosmetic things, decontamination is best, and we will start that our Ayurvedic preparations, Ayurvedic formulations for these uses. Now, symptomatic and sportive measure. Next is mothballs. As you all know, camphor, naphthalene balls, they all are poisonous. They are poisonous, but we are using frequently these products. Clinical effect, if we are going for camphor mild to moderate. Nausea, mild to moderate, camphor cause nausea, vomiting, seizures. In severe, delirium, visual hallucination, cerebral edema, epileptic status, hypotension, tachycardia, respiratory failure, and finally death. Camphor can cause death if used in large amount, so that it's very toxic. Next is naphthalene balls, mild to moderate, that causes nausea, vomiting, diarrhea, headache, and restlessness. These are the mild symptoms. But if we are going for severe condition, then hematemesis, then hemolytic anemia, dysuria, seizures, renal failure, and acute lung injury. These are the clinical effects of that naphthalene and camphor. Treatment, decontamination. Naphthalene consider administration of activated charcoal after a potential toxic ingestion. Most effective when administered within 1 hour of ingestion, because इसका क्या है, बहुत जल्दी वॉलेटाइल की वजह से बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है. तो विद इन 1 आवर अगर हम इसको एक्टिवेटेड चारकोल से ट्रीट करते हैं तो इट इज ट्रीटेबल. लेकिन अगर थोड़ा सा लेट होता है तो एक्टिवेटेड चारकोल भी यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता. देन कैम्फर जनरली नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू द फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन. कैम्फर का भी सेम वही है, वॉलेटाइल्स की वजह से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और रिस्क ऑफ सीजर्स होते हैं और बहुत जल्दी ये एब्जॉर्बिशन शुरू हो जाती है. Now next is precautions to avoid household poisoning. Precautions to avoid household poisoning. Keep all toxic hazardous products away from the reach of children. Ensure that all toxic hazardous products are stored in the original container to allow you to read the important information on the label. Do not transfer any toxic hazard product into another container. If you must do so, make sure the container is clear labeled. Never use any empty container of toxin or hazard product to store any food or drink. Protect yourself with gloves, mask, apron. Handle with care all the hazardous products. Next is medicinal poisoning. As we already discussed household poisoning. Household poisoning is of 3 categories: household, domestic, medicinal, and then garden poisoning. Next category is medicinal poisoning. All these medicines can harm and even kill your child. Anticonvulsants, antidepressant, antihistaminic,
aspirin, cold and flu medicines, many more medicines, even iron tablets, even vitamins, the nicotine patches, these all are their poisonous effect. Even they can kill you and your children. There are many more medicines that will produce hazardous effect to our body. Those are poisonous for human beings. Next, let's discuss first and most important, that is, and most common group of medicine that we are using frequently in day-to-day life. That is painkiller, pain management. Without thinking a minute, we are using pain management medicines. Or we can say that painkillers. Perhaps you feel headache, vomiting, common pain, experience menstrual pain, menstrual cramps, just feel aches, or pain from virus, cold, whatever the reason is. It isn't uncommon for adults to turn to pain medications. Everybody, थोड़ा सा पेन हुआ, पेन मैनेजमेंट ले लो, पेन किलर ले लो. वो क्या करेगा, पेन सबसाइड करेगा. लेकिन हम कॉज ऑफ पेन कभी नहीं ढूंढ रहे, हम सिर्फ पेन देख रहे हैं, पेन हो रहा है, पेन किलर खा लीजिए. एंड दीज पेन किलर हैव देयर हैजर्ड्स इफेक्ट, हैव देयर टॉक्सिक इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल ब्रूफिन है, पैरासिटामोल है, ऑल दीज ग्रुप्स पेन मैनेजमेंट जिनको हम बोलते हैं, ऑल दीज can help for pain, but consider as an easy available poison at our home, at our that cupboards. Everybody, in every home there is a painkiller in their cupboards. Large dose of these medicines cause vomiting, abdominal pain, diarrhea, bloody diarrhea, ulcerations, and even coma. Be sure, if you are taking, be sure that recommended dose, and if you are taking with other medicines, make sure जो आप दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी पेन किलर है तो नहीं, सो दैट कि आप एक पेन किलर ले रहे हैं प्लस आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पेन किलर है, तो वो डोज इंक्रीज करके क्या करेगा, आपके हैजर्ड्स, आपके इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज करेगा. कॉमन यूज टू ट्रीट. नेक्स्ट इज एंटी डिप्रेसेंट. अगर हम पेन किलर्स पे जाते हैं तो इक्वली हम लोग नाउअडेज आप देखना आप हर एक हॉस्पिटल में देखिए डिप्रेशन के इतने पेशेंट्स हैं जिनका कोई अंत नहीं. इवन स्टूडेंट्स, इवन वर्कर्स, एवरीबॉडी, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में अभी हमारा क्या पूरे वर्ल्ड के एनवायरनमेंट में ये चीज आ रही है कि सभी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं. रीजन बहुत सारे, कुछ पर्सनल रीजंस हैं, कुछ एनवायरमेंटल रीजंस हैं, कुछ वो चीजें हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या है, सीधा डायरेक्ट फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है एंटी डिप्रेसेंट ले लेते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता कि एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद हम लोग कितने साल तक ये लेंगे और कितने मिनट के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट से वापस आएंगे और कितना डीप हम इससे वापस जा रहे हैं. आफ्टर टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट आप फील करेंगे कि हमने अगर एक टैबलेट एंटी डिप्रेसेंट की ले रहे हैं, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डे नहीं लेते हैं तो हम डबल डिप्रेशन में आते हैं. दीज आर एंटी डिप्रेसेंट और इनके इफेक्ट क्या हैं, कॉमनली यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, जैसे पैनिक डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, PTSD, OCD है, and even fibromyalgia. Antidepressants are considered safe if taken correctly. Okay, according to modern, they are safe if taken correctly. But according to Ayurveda, depression के लिए और काफी सारी चीजें हैं. डिप्रेशन के लिए हम शिरोधारा करवा सकते हैं, तक्रधारा करवा सकते हैं, हम लोग त्रिफला लेके हम लोग उससे हम शिरोधारा करा सकते हैं, हम हर्बल एसेंशियल ऑयल्स यूज कर सकते हैं, हम लाक्षादि तेल यूज कर सकते हैं शिरोधारा के लिए. और लाक्षादि का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है एंटी डिप्रेसेंट. हम एंटी डिप्रेसेंट ना लेके हम लोग लाक्षा को यूज कर सकते हैं, हम तक्रधारा यूज कर सकते हैं. अगर हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, सिंपल जलधारा कैन ट्रीट आवर डिप्रेशन. So better go for Ayurvedic treatment rather than these antidepressant medicines.
Next, it is important to note that one type of antidepressant called SSR, that is selectively serotonin reuptake inhibitor. ये एक medicine है इसकी that causes serotonin syndrome in certain people, and this syndrome may be life-threatening syndrome. अगर हम एंटी डिप्रेसेंट लेके हम डिप्रेशन ट्रीट कर रहे हैं जिससे कि डिप्रेशन ट्रीट हो रहा है, लेकिन यही मेडिसिन कहीं ना कहीं जाके सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या कर रहा है, सेरोटोनिन बॉडी में इंक्रीज कर रहा है, दैट कॉजेज सेरोटोनिन सिंड्रोम एंड विच इज लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम टू अस. With this condition, too much serotonin has overtaken. Keep in mind that serotonin syndrome can occur within a few hours after starting these new medications. That causes nausea, vomiting, confusion, very high temperature, seizures, irregular heartbeat, and finally coma. Next, the most important, that is vitamins. We are using vitamins commonly. Everybody is using vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Everybody is using these vitamins without thinking that these also causes a hazard effect to our body. That we all knows, vitamin E, D, K, all are fat soluble vitamins. Vitamin E, A and D, that are fat soluble vitamin, but they have tendency to store in our body. They have tendency to store in our body, that fat soluble vitamins. If they are stored, if we are taking in huge amount or in large dose, these stores in our body, and that storage vitamin causes hazards to our body, and even large dose of these vitamins can kill our children. Even water soluble vitamin like B6, that is also toxic if we are taking in large amount of vitamin B6. Now, amount that they are acceptable to adult, that amount which are acceptable to adult can be potentially deadly when it comes to your children, बिकॉज चिल्ड्रन का जो डोज है वो डिफरेंट है, अडल्ट का डोज डिफरेंट है. जो हमें दे रहे हैं, हम जो विटामिन खा रहे हैं, एक गोली खा रहे हैं, 2 गोली खा रहे हैं, वो हमारे एज एन अडल्ट हमारे लिए दैट इज okay, but for our children that is deadly poison. Keep all over the counter and prescription medicines plus vitamins out of reach of your child, your teen and your babies. Even a simple vitamin such as adult vitamin can be poisonous to a child, causing bloody vomiting, bloody diarrhea. Next is some medicinal poisoning. Some more medicinal poisoning, for example, are, as you all know, they're very important for children, that is button batteries, not for adult. Let's discuss what are button batteries and why they are harmful to our children. Because from our day-to-day life, we are used to play that remote cars, remote toys, dolls. They all containing button batteries, even our watches, everything that we are using, electronic items that containing button batteries, that is lithium cell. Especially be mindful that the 20 mm lithium coin cell diameter is 5 to 25 mm and thickness is 1 to 6 mm. Easily आपका बच्चा उसको easily engulf कर सकता है, बहुत इजीली. और हम लोग क्या सोचते हैं कि ये बहुत ये है क्लियर है, ये तो बहुत कम है, इसका डायमीटर बहुत छोटा है, ये तो इजीली पास हो सकता है. बट अगर ये बॉडी के अंदर रह जाता है, इट रिलीजेस वोल्टेज, lithium, and that is very dangerous for your child. That causes perforation of esophagus and even perforation of stomach. See, when swallowed by children, especially those young, less than or more, younger than 4 years, it often lodged into esophagus, causing burning within 2 hours. A hole in the esophagus may be developed, burn up to the trachea and aorta. More than 60 children have died for swallowing these button batteries. Because
because of hydroxide and alkaline chemicals can cause tissue burn. These button batteries release hydroxide and alkaline that increase the burn of that area. High voltage, these releases high voltage and energy that also causes burn to that area, especially esophagus. If stuck in esophagus, our stomach are more than up to aorta and trachea, that causes severe burn. Iron pills, adults strengthen iron pill are very dangerous for children. Children can start throwing up blood and heavy bloody diarrhea in less than an hour. Next is alcohol. Next poisoning, common household poisoning. बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें अल्कोहल है. फॉर एग्जाम्पल माउथ वॉशेस हैं, फेशियल क्लीनर्स हैं, दैट आफ्टर शेवर्स हैं, कुछ डियोज हैं, कुछ परफ्यूम्स हैं दैट कंटेनिंग अल्कोहल. मोर देन द अल्कोहलिक बेवरेज, उनसे ज्यादा उनमें कंटेंट होता है किसका, अल्कोहल का. When children swallow alcohol, they can have seizures, go into coma, or even die. This is true no matter where the alcohol comes from. So alcohol is a very dangerous household product. In household products that alcohol is present, they are very dangerous and hazard for our body and for our children. Topical anesthetics. These medicines can cause seizures or condition called methemoglobinemia, which keep the blood from carrying oxygen into the tissue. Be especially careful with teething gels, that hemorrhoid preparations, anti-itch cream, and sunburn relief. It's a condition. What is methemoglobinemia? Actually, it's a condition when specific type of hemoglobin known as methemoglobin that carries oxygen through your body but does not release it on the cell. They carry oxygen but does not release on the cell. That causes hypoxia or cyanosed, that is blue discoloration of the skin. And topical anesthesias always causes blue discoloration and that less amount of oxygen in our body. That's why in treatment there is oxygen therapy is the most important therapy for that anesthetic agents. Now safety measures. Now let's discuss safety measure of medicinal household poisoning. सेफ्टी मेजर्स में हम लोग खुद अवेयर हो जाएं कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस चीज से बच सकते हैं. बिकॉज हम अगर ये बोलें कि बीइंग आयुर्वेदिस्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में सारी एक्टिविटीज प्लस काफी सारी चीजें हम अपने चेंज करवा सकते हैं, बट कॉमन मैन ये सब चीजें नहीं कर सकता. तो उनके लिए सेफ्टी मेजर्स हम ये बताएंगे कि जितनी भी मेडिसिन हैं उनको प्रॉपरली रखा जाए. लाइक स्टोर मेडिसिन कैसे करें, प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन जो भी मेडिसिन हैं वो सेफ्टी लैच में रखी जाए. किड्स कैन क्लैम अप by using their toilet and countertops to get the item placed up high, so locked the cabinet with the key. Make sure purses and bags your guests that could contain medicines are kept out of the reach of children all the time. Always keep medicines in their original container. जैसे हम लोग का normally क्या होता है, किसी और चीज का कंटेनर है कोई और चीज यूज हो रही है, तो आप लोग ये मेक श्योर करेंगे कि जो ओरिजिनल कंटेनर है उसी में वो चीज रहेगी. अगर हम शिफ्ट भी कर रहे हैं तो एक उसमें लेबल होना चाहिए कि उसमें दैट पर्टिकुलर ड्रग इज इन दैट कंटेनर. बी अवेयर ऑफ ऑल मेडिसिन इन योर होम एंड हाउ मेनी पिल्स आर लेफ्ट इन द कंटेनर. आपको पता होना चाहिए कि हम मेडिसिन अगर रख रहे हैं या खा रहे हैं, कौन सी मेडिसिन हमने कंज्यूम कर ली, कौन सी मेडिसिन हमारे पास है. कभी कभी घर में बहुत सी डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं,
उनका एक्सपायरी तो नहीं होती है लेकिन डिस्कार्डेड होती हैं, वो यूज नहीं हो रही हैं और हम उसको एज इट इज रखते रहे, और वो जो मेडिसिन है वो हमारे लिए सेफ नहीं है। हमारे लिए हम सोच सकते हैं वो सेफ है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए वो सेफ नहीं है। So if your kids spend a lot of time at their relatives place, तो आप मेक श्योर करें कि उनके घर में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो वो ले रहे हैं, या कुछ ऐसा तो नहीं है वहां पे कोई पेस्टिसाइड ओपन तो नहीं है, कोई मेडिसिन ओपन तो नहीं है जो कि आपके बेबी के लिए हार्मफुल। Don't assume your children can't open medicine package. Everybody assuming that ये पैकिंग तो बहुत टाइट है, बेबी नहीं ओपन कर सकता, बट children resist packing does not mean they are children proof packing. Never prepare or give medicine to a children in a dark room. Never. With wrong dose or even with wrong medicine. Never tell a children that the medicine is like a candy. क्योंकि आप ये बोलेंगे हो सकता है वो कल को कैंडी और मेडिसिन को डिफरेंशिएट ही ना कर पाए। तो ये चीजें आपने अपने बेबी को एज इट इज बताना कि हाँ ये मेडिसिन है, ये हम सिर्फ इस चीज के लिए ले रहे हैं, ये हमने डेली लाइफ में नहीं लेनी है, सो दिस इज नॉट अ कैंडी। इफ योर ओल्डर चिल्ड्रन आर टीन मैनेज टू देयर ओन मेडिसिन, एज बड़े हैं खुद अपनी मेडिसिन मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर स्टोरेज कर रहे हैं, वो प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, वो कोई उस मेडिसिन के साथ डोज में कोई डिफरेंस तो नहीं कर रहा। Stored medicines, cleaning and laundry products, detergent packets, pesticides in their original packets, locked cabinet में यूज करें रखें, मेक श्योर करें कि जो कैबिनेट में लॉक है वो प्रॉपर लगा है, वो लैश खराब तो नहीं है, और अगर वो खुद ब खुद वो लॉक हो रही है या वो ओपन हो रही है तो आपको श्योर करना है कि आपका बेबी, आपका जो चाइल्ड है वो वहां तक ना पहुंचे। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी लैट्स हैं, कुछ सारे ऐसे कैबिनेट आते हैं जो प्रॉपर लॉक लगे हुए होते हैं, उनमें ही ये सारा रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने मेडिकल कॉलेजेस में देखते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी पॉइजनस ड्रग्स हैं, रस शास्त्र डिपार्टमेंट, इन द्रव्य गुण डिपार्टमेंट, इन आर अगतंत्र डिपार्टमेंट, देयर आर सो मेनी विष, उपविष ये रखे हुए हैं, डिस्प्ले होते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि वो सारे विष जो हैं विद प्रॉपर दैट लेबलिंग, उन पे प्रॉपर लेबल किया गया है, और वाइल दैट शोधन, हम बलात्क शोधन कर रहे हैं, हम वत्सनाभ शोधन कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स आफ्टर 12th आते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि इनके हैजर्स इफेक्ट क्या है, ये हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट कर सकते हैं, हमें उनको बताना है इसके इफेक्ट्स क्या हैं, सो दैट स्टार्टिंग में हमने उनके परचेज अपने लेबलिंग करके लॉक करके रखना है, जब तक कि उनको उनके प्रॉपर साइड इफेक्ट्स, प्रॉपर सिम्टम्स प्रॉपर पता ना चले कि ये पॉइजन्स क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है, तब तक मेक श्योर करें कि आपके स्टूडेंट भी इस चीज से दूर रहें। बहुत सारे कॉलेजेस का ऐसी हिस्ट्री है कि गलती से वत्सनाभ खा लिया बच्चे ने, गलती से दैट एब्रिस प्रिकिटोरियस, इसका भी एक हिस्ट्री है कि किसी बच्चे ने ऐसे खा लिया था, बिकॉज रेड कलर है, बहुत अट्रैक्टिव है दिखने में, तो ले लिया, दैट कॉजेज दैट सिम्टम्स, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के साथ वो बाद में क्योर हुआ था। तो इसीलिए हमें मेक श्योर करना है कि हमारे अपने कॉलेजेस में भी प्रॉपर कैबिनेट बने हुए हैं, और वो डिस्प्ले अगर हम कर रहे हैं, जो भी विश कर रहे हैं या फिर उपविश कर रहे हैं, या फिर हर्बल गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज लगे हुए हैं जो कि पॉइजनस हैं, और उन पॉइजनस ट्री और प्लांट्स के नीचे हमें प्रॉपर लेबलिंग करनी है विद 1 or 2 सिम्टम्स। ओके, अगर हो सके तो हम उसके फैटल डोज भी उन स्टूडेंट्स को पहले ही बता दें कि नहीं ये जो है इसको हमने प्रॉपर केयर और प्रॉपर दैट हैंडल प्रॉपर केयर से करना है विद प्रॉपर मेजर्स। Never place poison product in food or drinking container. Maintain work, जो वर्किंग स्मोक्स और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर हैं वो प्रॉपर वर्किंग मैनर में होने चाहिए। जैसे कभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज रिलीज होती हैं, वहां पे चिमनीज लगी हैं टू डिटेक्ट दैट लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि जो हमें चिमनी लगी है, जो वहां पे वर्क मेंटेनिंग लगी हुई है, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं या वो स्टॉप कर चुकी हैं काम करना।
ठीक है, जैसे हमारे नॉब्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, उन सब में बटन बैटरीज रहती हैं। जो हमारे बच्चों की छोटी छोटी कार्ड्स रहती हैं, उन सब में बटन बैटरीज रहती हैं। तो हमने मेक श्योर करना है कि वो लॉक है, वो हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा इंजरीज करेंगी। तो उन चीजों को हमने सेफ्टी मेजर्स में ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और अगर आपके यार्ड, आपके किचन गार्डन या आपके गार्डन में कोई प्लांट्स लगे हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको पता ही नहीं है कौन से हैं, तो वो आपने उन प्लांट्स के बारे में आप जानिए, देखिए इसमें कोई पॉइजनस प्लांट तो नहीं है जो आपके बच्चे के लिए, आपके पेट के लिए हार्मफुल करे या कोई उसको पॉइजनस इफेक्ट करे। नाउ थर्ड वन, दैट इज गार्डन पॉइजन. In household poisoning, first was that domestic, then medicinal, and now last one is garden poisoning. Now comes, let's discuss what is garden poisoning actually and what are the side effects and effects of garden poisoning in our life. Weeds, insect spray and powders, snail are insect bait, mouse and rat bait. They all comes under garden poisoning. By garden chemical that comes fitted with children resistant caps. Store the container out of reach of children in a lockable cabinet. Carefully follow the instruction on the label when mixing and applying the chemicals. Wear protective measures, clothing, and use protective equipments as well as face mask, respiratory spray only when the air is still. Ask your local authority about the safety, why to dispose and of chemicals you no longer need. These should not be poured down the drain. Next is pesticide. As we all know, everybody nowadays were using pesticide for greens, for their fields, for garden, for kitchen gardening. That symptoms of pesticide is blurred vision, tearing and sweating, loss of bowel and bladder control, difficulty in breathing as the airway may fill with fluid, tremors, muscle twisting, coma, and finally death. Now, what are the precautions? Choose the correct product for the problem being treated. Because pesticides are always poisonous. हम इसका किसी के साथ exchange नहीं कर सकते. So हम इसका एक precautions कर सकते हैं कि choose the correct product for the problem being treated. Use the least amount that will do the job. मिनिमम अमाउंट लाएं और उतना ही अमाउंट यूज करें जितना यूज हो गया. घर में इसको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है. हैंडल विद पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर केयर. Avoid using products in an enclosed or unventilated space. Discard them in an environmental sound manner and keep children and pets away. Now precautions. Pesticide का ही precautions क्या है? Never transfer pesticide to another container. Children may associate with food or drink. Never place rodent or insect bait where small children can get to them. Teach your children that pesticides are poison and something they should not touch. Alert others to the potential hazards of pesticide, especially caregiver and grandparents. Now, after pesticides, let's discuss one thing, that is anti-repellent. How come we forget anti-repellent? Mosquito, anti-repellent mosquito creams, or coils, or gel, or liquid. These anti-mosquito repellent coils containing parathrin and parathyroid, which worldwide cause asthmatic effect. That coils causes asthma, breathing problem, sneezing, nasal stiffness, headache, etc. Many more complications will occur with these anti-repellent coils. These anti-repellent maximum containing parathrin.
These are the symptoms of parathyroid. Now next is parathyroid, that also contain in that mosquito repellent coils, that causes vomit, nausea, abdominal pain, increased secretions, many more secretion, increase that secretions that causes dysphagia. We can avoid these effects. Repellent coils. As you all know, what is repellent coil? Mosquito repellent we commonly use these coils at our home, in our room, without thinking a minute what hazards effect or what the different that chemical clinical effects are with these, but we never use. Can we replace these repellent coils with our herbal coils, or the with our herbal that drugs? Yeah, we can. There are, as you all know, इन चरक संहिता, चरक चिकित्सा स्थान 23 अध्याय, वहां पे आचार्य चरखा ने एक कोट किया है पूरा श्लोक, जिसमें ये बताया है कौन कौन सी हमारी आयुर्वेदिक ये है हर्ब्स हैं, जिसको हम अगर हम उसका फ्यूम लेंगे, उसका हम धूपन करेंगे, तो हमें ये मॉस्किटो और हमने मतकुंड है, मॉस्किटो है, इन सब को रिपेलेंट करती हैं वो। आपके चरक चिकित्सा में 23 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। जैसे उसमें ये दिया है, सीता फल का जो है पत्र है, सीताफल पत्र है, गोमे है, गुगुल है, नीम है, ये सारी जो हर्ब्स हैं अपनी उसमें हैं, और ये सब अगर हम यूज करते हैं फॉर मॉस्किटो रिपेलेंट, तो 100% मॉस्किटो रिपेलेंट उसका इफेक्ट देखा गया है। आयुर्वेदिक मॉस्किटो रिपेलेंट मार्केट में है, जिसमें पैराथ्रोइड नहीं है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी जो हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम गुड नाइट और मेनी मोर प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर मॉस्किटो रिपेलेंट्स और मॉस्किटो कॉइल्स। नेक्स्ट, दैट इज रोचा एंड एंट बेट। बेट्स आर मेड विद, बेट क्या है? जो हम किसी भी चीज को डाल देते हैं, कोई भी एंट्स हैं या कोई चीज है, हम बेस डाल दिया, कोई भी उसके एपेलिंग मटेरियल के साथ हमने डाल दिया, सो दैट वो उसको किल करेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारे पेट्स, हमारे चिल्ड्रन आसपास घूमते हैं, हो सकता है वो उनको अपीलिंग लगे और वो उठा के वो मुंह में डाल सकते हैं। सो नेवर मेक समवन वॉमिट इफ दे हैव इंजेस्टेड एनीथिंग क्वेश्चनेबल। जब तक आपको पता नहीं है कि बच्चे ने या बड़े जो भी है उसने क्या खाया है, तो आप उसे वॉमिटिंग के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट कॉजेस एस्पिरेशन। Rinse your hand, mouth, but do not eat or drink anything. Always store beds away from children reach. Alert those to the potential hazards of beds, especially caregivers and grandparents. Next, what are the different different treatment for different for different poisoning in immediate treatment? For example, if solid poisoning, take the item away from the children and have the children spit out any remaining substance. Do not make your children vomit. Do not use any syrup that causes vomiting or that induce vomiting. Solid battery, अगर कोई बटन बैटरी ले लेता है तो उसमें क्या करना है? If your child has swollen a button battery or battery is lodged in her or his ear, nose, or any opening like throat, or seek treatment in the hospital emergency department immediately. Serious tissue damage occurs within 2 hours. Skin poisoning, remove the child clothes and rinse the skin with lukewarm water for at least 15 minutes. Flush the child's eye. If eye poisoning, flush the child's eye by holding the eyelid open and pour water stream at room temperature water into the inner cornea for 15 minutes. ये
सिंपल मेजर्स हैं जो आप घर पे ही कर सकते हैं। एक बटन बैटरी है जो आपने इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना है, अदरवाइज अगर बाकी आपको जो बाकी पॉइजनिंग है आप फर्स्ट एड घर पे ही कर सकते हैं। अगर पॉइजनस फ्यूम्स हैं तो टेक द चिल्ड्रन आउटसाइड and are into the fresh air immediately. If the children has stopped breathing, start cardiopulmonary resuscitation. You can start if you know. अगर नहीं तो आप उसको hospitalize कर सकते हैं until children breath his or own and until someone can take over. Now, what are the rules? Thumb's rule for rule out the poisoning. कौन से रूल्स हैं जिससे हमें लगे कि जो पॉइजनिंग है वो ग्रुप में हुई है और वो पॉइजनिंग ही हुई है, वो कोई और सिम्टम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है. दैट इज थम्स रूल फॉर रूल आउट द पॉइजनिंग. दैट इज सिम्टम्स अपीयर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ आफ्टर फूड और ड्रिंक. एक जैसे सिम्टम खाने के बाद ही तुरंत बाद हो गया. सिम्टम अपीयर सडनली इन एन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल विदाउट एनी antecedent history. In family, if similar symptoms are appear in multiple family members, जैसे फूड पॉइजनिंग है, एक साथ सब लोगों ने खाना खाया, एक साथ ही वो अपीयर शुरू होने लगते हैं, स्टार्ट होने लगते हैं सिम्टम्स. सडन ऑनसेट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया. Sudden unexplained onset of drowsiness with or without fixed change in pupil size, either dilated pupil or pinpoint pupil. जैसे pupil में poison और pupil का बहुत अच्छा relation है. पिन पॉइंट पीपल है या डायलेटेड पीपल है, हमें पीपल को देख के ही एक हम ये अनुमान लगा सकते हैं. पीपल से हम पॉइजन का अनुमान लग सकता है. ठीक है, तो इसीलिए हमें फिक्स्ड पीपल देखना है. साइज क्या है उसका, आइदर लार्ज है, पिन पॉइंट है, रिएक्ट कर रहा है लाइट से या नहीं कर रहा है. अनएक्सप्लेन्ड सडन ऑनसेट ऑफ कन्वर्जेंस, सडन अनएक्सप्लेन्ड ऑनसेट ऑफ disorientation without fever or an other foreseeable reason, sudden unexplained onset of paralysis in your young child. Now comes on conclusion. Conclusion, total हमने अभी household poisoning का देखा, that domestic household poisoning, medicinal household poisoning, then garden household poisoning. Because ये तीन चीजें हैं जो हमारे घरों में बहुत commonly use होती हैं. ठीक है, चाहे वो हाउस होल्ड हो जो हम डिसइंफेक्टेंट्स के लिए यूज करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो जो हम छोटी छोटी कोई भी डिजीज है तो चलो जी मेडिसिन ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले लेते हैं, या फिर हमारे गार्डन में है पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्ट्स हैं, या कोई रोडेंटिसाइड्स हैं, या मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, वो सारे हमारे हाउस होल्ड पॉइजनिंग में. तो कंक्लूजन ये है कि हमें इन सब चीजों को प्रॉपर देख रेख में रखना है. एनी हाउस होल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ लीथल पॉइजनिंग एंड टॉक्सिक. कोई भी वर्ल्ड में कोई भी हाउस होल्ड जो है उसकी एक पोटेंशियल है कि वो लीथल पॉइजनिंग है एंड टॉक्सिक है टू आवर बॉडी. द डे टू डे usable article ranging from medications up to their toilet cleaners are highly toxic substances and amenable for poisoning. Both international, self-harm and accidental due to household agents are menacingly increase. Day by day increase कर रहा है ये problem. Children 6 to 8 year age group are more vulnerable for accidental exposure of household poisoning. ये आपको एक चीज देखनी है, चिल्ड्रन 6 to 8 एक्सीडेंटली, 6 to 8 जो है या बिफोर 6 दैट इज 2 to 4 मान लो, ये सारे एक्सीडेंटली कुछ जो भी इनमें पॉइजन होता है वो एक्सीडेंटली होता है. तो इस चीज को हमें बचाना है कि हम इस चीज से कैसे बचाएं. हमें कंटेनर्स दूर रखने हैं, हमें उनकी रीच में ये कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, बिकॉज उनको समझ नहीं है कि ये सही है या गलत है. लेकिन जो चिल्ड्रंस अबव 18 to 30 ये मान लो अडल्ट ग्रुप है, वो खुद वॉलेंटरीली ये चीजें लेके सुसाइड कर रहे हैं. नाउअडेज मैक्सिमम पेस्टिसाइड आर यूज्ड फॉर सुसाइडल एजेंट्स. हमारे बच्चे 18 आजकल तो मुझे लगता है 16 से अबो जितने भी चिल्ड्रन है वो वॉलेंटरी सुसाइडल टेंडेंसी जिनमें है वो सुसाइड के लिए ये एजेंट्स यूज कर रहे हैं.
तो कंक्लूजन ये है कि 18 से पहले 16 से पहले जो है वो एक्सीडेंटली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और 18 to 30 बिकॉज आफ्टर 30 एक स्टेबिलिटी आया, हमें सोच बढ़ती है हमारी, तो उस टाइम पीरियड में वो सुसाइड के लिए ये चीजें यूज करते हैं। मेडिकेशन, क्लीनिंग एजेंट्स एंड कॉस्मेटिक आर यूजुअली culprit for pediatrics, poisoning in household and young adult 18 to 30 years of age group. So, जो rodenticides हैं, pesticides हैं, hair dyes हैं, committing suicide using household agents. A multi-sectoral approach by different stakeholders is required to educate parents and anti-suicidal counsel to the young ones. एडल्ट्स को उनकी काउंसलिंग करानी है कि ये जो है वो ये कभी भी वो ये चीजें यूज ना करें, ठीक है। तो ये एक पेरेंट ही उनको ये चीज समझा सकता है, या फिर हम उनकी अप्रोच से दूर रहेगा। अगर अप्रोच ही नहीं है, इजिली अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो ये चीजें हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। पेरेंट में सीक हेल्प फॉर पॉइजन कंट्रोल सेंटर इन इमरजेंसी। That's all. Thank you. Thank you all of you for listening, for your patience, and best wishes for your webinar, that is Hridaya Avaran. Thank you, madam. Very informative and essential presentation. You have covered all household poisoning. Thank you, madam. We move for the vote of thanks. Good afternoon to all. Today we completed 4th day session, a national webinar series Hridaya 2020. Today we had a session on household poisoning by Dr.Harmeet Kour, Madam, Associate Professor, Department of Agada Tantra, SKSS Ayurveda Medical College, Sarab, Panjab. It is the end of today's session with vote of thanks. Myself, Dr. L.K. Pattar, Associate Professor and HOD, Department of Agada Tantra, SVMAMC ILKAL. First and foremost in my prevalence to thanks with blessings of His Holiness Sri Manipura Sri Mahanta Swami, Guru Mahanta Swamiji, as the event started with Swamiji blessings. Thank you, Swamiji. I thank to SVMVV Sangha, Chairman, Secretary, and all the board members for providing an opportunity and support to organize this national webinar series Hridaya 2020. Thank you, sir. I thank to our today's speaker, Dr. Harmeet Kaur, Madam, Associate Professor, Department of Agada Tantra, SKSS Ayurveda Medical College, Sarab, Panjab, that took to talk on household poisoning. Thank you, Madam. I thank to our event president, Dr. K.C. Das, Principal, SVMAMC ILKAL, for his kind-hearted care and backbone of this national level webinar series, Hridaya 2020. Thank you, sir. I thank to event coordinators, Dr. Srimati Manjura, Madam, Associate Professor, Department of Agada Tantra, SVMAMC ILKAL, and also Dr. J.N. Kannoli, Assistant Professor, Department of Sanhita Siddhanta, SVMAMC ILKAL, for their support and conducting the national level webinar series Hridaya 2020. Thank you all the event coordinators. I extend my thanks to all the teaching staff and non-teaching staff, PG and UG internees of SVMAMC ILKAL for supporting and being a part of national level webinar series Hridaya 2020. Thank you all. I thank to the Department of Agada Tantra Evam Vyavahar Ayurveda, SKSS Ayurveda Medical College, Sarab, Punjab, for their support and being the part of today's national level webinar series Hridaya 2020. Thank you. I extend thanks to all the teachers, PG and UG scholars of other institutions, especially SKSS Ayurveda Medical College, Sarab, Punjab, SVMAMC Ayurveda Medical College, ILKAL, and participants watched in YouTube for being the part of and participated in this
a national level webinar series, Hridayavan 2020. Thank you all the participants. Lastly, I thank to the people who helped directly, indirectly in organizing and conducting this national level webinar series, Hridayavan 2020. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, madam. Today we will end the session. Okay, thank you. मुगितल्ला. लीव करना था ना, बाय बाय बोलना था आपने, बाय बाय बोलना नहीं, इन्हें लीव हो गया था, लीव हो गया ना, मैंने पहले कर दिया ना।